So we will do some miscellaneous questions, miscellaneous techniques or strategy for integration. So as all of you have seen that integration is more challenging than differentiation in finding the derivative of a function, it is obvious which differentiation formula we should apply. But however, it may not be obvious which technique we should apply or we are going to for integration of a given function. So in this section, you will learn about the techniques to evaluate miscellaneous integrals. So this section, this basically PPT file does not over map to any of your section of your book, but it's an overview of what we have done so far. So you will, for practice, you will solve the advanced questions at the end of this chapter. So the first of all, the first thing for the strategy to integrate is, or the prerequisite for the integration are the integration formulas. That is the basic integration formulas, the 20 integration formulas, and we have done all the derivations of these integration formulas, and you must know all of those formulas. You have a knowledge of those formulas. So there are 4 steps involved basically in the integration. The first step is simplify the integrand if possible. Simplify it if it's given in the terms of rational or irrational function. Simplify it if you can take any function common or you need to multiply any function, or if it is a trigonometric, consists of trigonometric functions, you can simplify it. Look, second step is look for an obvious substitution. That is, if you want to substitute that function whose derivative also occurs in the integrand. Thirdly, classify the integrand according to its form. That is, what form is it? That is, we have done in the last lecture. That is, it is of this form, this form. Then we can substitute it accordingly. Try again. This would be the 4th step. Okay. The first step is simplify the integrand. For example, if I'm given this function, if I multiply it with this x square root, I will get this. And this integration now gets very simple. If I'm given this function, this trigonometric integrand, then by simplifying it means, first of all, I will write tan theta as sine theta over cos theta, and secant square theta can be written as 1 over cos square theta. And then I can simplify it further to sine theta cos theta. Now I can solve it in 2 ways. Function sine theta multiplying with its derivative, so it becomes sine square theta over 2. Or I will make use of the trigonometric identity, that is double angle identity for sine theta. I will write it as 2 sine theta cos theta is equal to sine 2 theta. So this must equal to 1 over 2. Now I can integrate it simply, which is integration is minus cos 2 theta over 2. Now if I am given this integrand whole square, simplifying means first I have to expand this whole square, and then I can add sine square x plus cos square x, which is equal to 1. And this could be done with this method, or this could be done by using the substitution method. So the second step would be try some obvious substitution. That's if we are given this function x over x square minus 1, then I can substitute x square minus 1 equal to u because its differential or its derivative is 2x, which also appears in the integrand, also occurs in the integrand. Apart from a constant factor, I can adjust the constant by multiplying it and dividing it with the same number. So then I can use the partial method of partial fraction over here. The third step is look for the form of the substitution. That is, if the product of sine and cos x, product of tan x and secant x, and product of cotangent and cosecant x. So we can apply the method of our section 8.4, that is trigonometric integrals. And if I had the rational function, I can apply the method of section 8.3, that is the method of partial fractions, rational function. So integration by parts could also be a mean for integration. So it would be applied if I have a product of power of x, that is a polynomial function,
and a transcendental function. Transcendental function may be trigonometric, exponential, logarithmic, etc. So we will apply integration by parts. Integration by parts normally is applicable when we have product of two functions of which one function is a polynomial and the second function may be a logarithm function or trigonometric function or exponential function. If you look at the exercises of section 8.2, you will see that most of them are in the same form. This that is product of the polynomial and the transcendental function. They could also be applicable to single function as well. For example, uh, if I have tan inverse of x, I have sine inverse of x, logarithm of x, then I can integrate it by integration by parts formula. Radicals means that is if the radicals, this type of things appear in my integrand, then I will make use of the substitution in the section 8.5, that is trigonometric substitution, right? And so if the first three steps have not produced the answer, remember that there are basically only two methods of integration, substitution and parts. You can solve anything by integration by parts. For example, if I have tan inverse of x, sine inverse of x, and ln of x, I can, and all inverse functions can be solved by using integration by parts method. Okay. So the fourth step C is manipulate the integral. That is, rationalize the denominator using trigonometric identities or multiplying it and dividing it by the same number. That is, if I have this, I have to integrate this function d 1 over 1 minus cos x, then I will multiply it with 1 plus cos x and divide it with the same 1 plus cos x. And after simplifying it, 1 minus cos square x is equal to sine square x. And when I divide it, break the fraction, that is, write it with 1 and cos x separately, I will get cosecant square x plus cos x over sine square x. So what would be the integration? कैसे होगी इसकी integration? How to integrate this function? मैम कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स और Good. हम कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स में साइन माइनस टू एक्स ऊपर चला जाएगा तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स उसके सामने है तो पावर रूल लग जाएगा फॉर्मूला Power 19. rule लग जाएगा. Very good. Formula 19, we can apply the formula 19 and so this integration becomes easy. So basically इसमें हमने किया क्या था कि हमने manipulate किया था, हमने इसको multiply divide किया था. So कुछ experience से भी हम कर सकते हैं. पिछली एग्जाम्पल सॉल्व की हैं, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने we make use of the previous example as well. For example, if I am given tan square x secant x dx, how to solve it? We have learned two strategies for solving the product of powers of tan and secant. The strategy A is when the power of secant is even, and the strategy B is when the power of tan is odd. So neither of the strategy can be applied to this. So for this, what we will do? We will replace tan square x by secant square x minus 1. Then we will get this secant cube x and secant x. Now secant cube x can be integrated by integration by parts by writing it as secant x into secant square x. Taking secant x as first function and secant square x as second function, where secant x can be integrated by using the directly using the formula. Sometimes two or three methods are required to evaluate an integral. For example, we can solve it by two methods. You can solve it by, if I write tan cube x over cos cube x, I can convert it cos cube x into secant cube x. And now I can apply my strategy B, which is if the power of tan is odd number, then I will separate the term tan x, the factor tan x and secant x
dx. So over here I will get tan square x and secant square x. So this is the derivative of secant x. So I must write the rest of the expression in terms of secant x. So I will replace tan square x by secant square x. So this is our first method, and the second method could be, that is, write tan cube x over cos cube x, and then this tan cube x can be written as sin cube x over cos cube x over 1 over cos cube x. Now अब आगे कैसे चलेंगे, अब क्या ख्याल है, किस तरह से कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू? हम tan क्यूब एक्स और secant क्यूब एक्स। वो तो ये मेथड था ना, ये एक मेथड हो गया, अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इसको अगर मैं लिखूं sin square x, I will separate one factor of sin of x and cos 6x, and I can write 1 minus sin square x as 1 minus cos square x cos 6x sin x dx. So if I take cos x equal to u with its derivative, so it becomes 1 minus u square over u power 6 into minus du. And now you can break the fraction, becomes 1 over u power 6 minus 1 over u power 4. ये minus हो जाएगा, ये plus du. Now integrate it simply by using the rule 1, formula 1, and then back substitution. ठीक है, ये है। तो इस तरीके से हम इसको एक मेथड और भी, यानी कि एक क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक से ज्यादा मेथड से भी, इट कुड बी सॉल्व बाय मोर देन वन मेथड. What about this one, e power x square root? What about the integration of e power x square root? जी, how to integrate e power x square root? Is it possible to integrate it? या फिर वैसे नॉर्मल पे Normal कैसे हो सकता है? E power x square root को we can write it as u, then it means x is equal to u square, x dx is equal to 2u du. So my integrand becomes e power u 2u du. So 2u e power u du. Now I will integrate it by parts. First function as it is, integral of second function minus integral of second function derivative of first function, which is 1. So this is 2u e power u minus integral of e power u is e power u. Now replace it. U is under root x, e power under root x minus e power under root x. Okay, this is the answer. और मैम एक्स डीएक्स की जगह 2u du कैसे रिप्लेस किया? एक्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में। ये x है ना बेटा, ये x था, अंडर रूट x है ये। नहीं मैम, तो वो ई अंडर रूट एक्स के साथ एक्स पे तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि एक्स डीएक्स की जगह रिप्लेस हो सके। नहीं, ये x नहीं आ रहा, ये x नहीं आ रहा था, सॉरी, ये मैंने वैसे लिख लिया। ठीक है, आप यस dx du, ये मैंने मिस्टेक कर ली थी यहाँ पे, बाकी तो ठीक है ना, इंटीग्रेशन हो गई। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट करना है। एक सेकंड, मेरी एक कॉल आ रही है, मैं अटेंड
जी स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट है ये क्वेश्चन. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? This is a rational function and an improper rational function. So first of all, we have to done the long division, and after long division, जी students आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही यस है. मैम. And after long division, we will solve it by method of partial fraction, और partial fraction के लिए we will factorize it, and factorization कैसे होगी? -3x - 10. इसको आगे देखें कि ये further factorize होता है या नहीं होता. अगर तो होता है तो इसको लीनियर फैक्टर के साथ कर लें, और अगर नहीं होता तो फिर इसको क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर होगा. व्हाट अबाउट दिस वन? ये ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन है. ln ऑफ मैम x. लॉग एक्स का 1/x डेरिवेटिव. तो ये du होगी. ये बेसिकली हमारे पास du है. तो ये क्या बन गया? 1 या ये 1/√u du. 1/u du, और ये हमें पता है u की पावर -1/2 du. तो फार्मूला 1 इस पे लगाएं, उसको सॉल्व कर लें. ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? What about this question? जी कोई बताएगा कैसे करेंगे इसको? If I multiply it with 1 minus x square root and 1 minus x square root, what will I get? 1 minus x over 1 minus x square the root, and further I will write it as break the fraction. Now this is sine inverse of x, and this could be done by using the formula 19. Function with the power multiplied by its derivative. This. What about this integral e power x square dx? How to integrate this function? How to integrate e power x square? मैम सिंपल तरीके से नहीं, और बेस एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव प्रोवाइड. वो नहीं यूज कर सकते ना, वही तो मैंने बताया था आपको. पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आ रहा ना, पावर का डेरिवेटिव वेरिएबल आ रहा है, 2x आ रहा है. उसे हम डिवाइड नहीं करेंगे. इसकी ये मैम इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगी कि e की पावर x स्क्वायर और पावर का डेरिवेटिव 2x. ये नहीं होगा जब तक के डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आता, तब तक हम ये नहीं लगाएंगे. तो ये चीज आपने नहीं यूज करनी है यहाँ पे. जी मैम इसकी पॉसिबल नहीं है. आपने एग्जांपल भी दिया था. पॉसिबल लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएगा. लॉग में लेके क्या लॉग में पॉसिबल हो जाएगी फिर इसकी? लॉग के तौर से तो मुश्किल हो जाएगी. इसका तो फिर आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे u को ले लूं x स्क्वेयर के इक्वल, तो du इज इक्वल टू 2x dx के इक्वल है. दिस इज इक्वल टू, और dx इक्वल आ जाएगा 1/2x du. इसको कन्वर्ट करना है इनटू u. 1/2x किसके इक्वल होगा? u स्क्वेयर रूट du के. तो ये मेरे पास जो चीज बनी वो बनी 1/2 e की पावर x स्क्वेयर इक्वल हो गया e की पावर u के, और ये इक्वल हो गया u की पावर -1/2 du. अगर इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन -3/2 du. So this is equal to 1/2 u की पावर -1/2 e की पावर u
So it becomes minus plus 1 by 2 u की power minus 3 over 2 e की power u du. Again I have to integrate, which is u power minus 2 e power u plus 1 over 2. So first function as it is, integration of वो second फर्स्ट स्टेप में function. यू नहीं आ रहा कहाँ पे? वो सेकंड हाँ सेकंड माइनस के बाद ये यू आ रहा है, ठीक है, थैंक यू. माइनस यही कह रहे थे ना, e की पावर u डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस 5/2 du. ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर ले, दोबारा से इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें तो आप आपके पास पहले e की पावर u की पावर -3/2 आ जाएगा, अब u की पावर -5/2 eu आ जाएगा. इंटीग्रेट करते जाएंगे -7/2, तो कहीं एंड नहीं होगी इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इसको इन एनी केस किसी भी हमारे पास नोन मेथड नहीं है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकें. सो इट्स इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल. e पावर x स्क्वायर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. ये हमारे पास ऐसे नोन मेथड नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर सकें. हम ये नहीं कह रहे कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर आए, लेकिन कम से कम हमें नोन नहीं है ऐसा एलिमेंट्री फंक्शन जो कि नोन हो. इस तरह के कुछ फंक्शंस और भी हैं, जैसे कि ये फंक्शंस कुछ यहाँ मेंशन किए हैं जिनका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, जिनको हम कह रहे हैं. ठीक है, तो इन फंक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेट करें अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए, तो क्या एरिया अंडर द कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा? e की पावर x स्क्वायर इंटीग्रल है, इसका मतलब तो क्या है? e की पावर x स्क्वायर इज पॉजिटिव, इट्स द एरिया अंडर द कर्व. और ये आपके पास कुछ 0 to 1 शेप मैंने सही नहीं बनाई इसकी. 0 to 1 अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो ये 0, तो क्या एरिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा? ये एरिया तो है ना, ये e की पावर x स्क्वायर है अगर, तो एरिया तो हमें मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर? जी, हाउ टू कैलकुलेट दिस एरिया अंडर द कर्व e पावर x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, because the area exists, the region exists, so we can calculate its area, but how to calculate it? मैम न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. Now we can, since we cannot integrate it exactly, that is we are, it's impossible to integrate e पावर x स्क्वायर. इंटीग्रेशन नॉर्मली हम कर कैसे रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम फंडामेंटल, वी आर डूइंग इट विद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. दैट इज वी फर्स्ट फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस, और इसके बाद हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं. ऐसे ही करते हैं ना इंटीग्रेशन में. तो यहाँ पे we cannot apply the fundamental theorem of calculus, so we cannot integrate it exactly, so we have to approximate its integration, we have to approximate the area, and for this we will move to the numerical integration or approximate integration. और इसके लिए फिर हम वो देखते हैं, और इसको मैं यहाँ से, ये आपका खत्म हो गया, ये इतना ही था. ये अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन का कोई आइडिया है? Have you any idea about approximate integration? So there are two situations in which it is impossible to find the exact value of a definite integral. The first situation is that we are unable to integrate a function. So we are unable to integrate, approximate the indefinite definite integral. That is, we are unable to we are unable to calculate the area under that curve using the fundamental theorem of calculus. What would be the second situation? First situation is, for example, it is impossible to calculate the area of e power x square from 0 to 1. Integrate the e power x square from 0 to 1. मैम लिमिट इंफिनिटी हो तो शायद.
वो तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में आ जाएगा ना, उसको तो हम इस कैटेगरी में नहीं रख रहे। जी, क्या होगी सेकंड सिचुएशन? एक तो ये जो मैंने अभी बता दिया, दूसरी क्या होगी? ये तो एग्जांपल ये फर्स्ट सिचुएशन की है ना। सेकंड की, द सेकंड सिचुएशन अराइजेस व्हेन द फंक्शन इज डिटरमिन्ड फ्रॉम अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थ्रू इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स और कलेक्टेड डेटा। आपको सिर्फ डेटा वैल्यूज गिवन है, यू आर नॉट गिवन द फंक्शन वैल्यूज, you are just given the data values and you want to calculate the definite integral. फंक्शन गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली उसका इंटीग्रल भी नहीं निकाल सकते, इंटीग्रल नहीं निकाल सकते तो डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वी आर गिवन द रीडिंग्स और द कलेक्टेड डेटा, द डेटा वैल्यूज. So for this we apply the method of approximate integration. So in this section you will learn how to find approximate values of definite integrals. कैसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स? जी कोई एक्सप्लेन करेगा? ये काम आपने किया था रीमन सम का सारा? मैम उसको मैम वो स्मॉल रेक्टेंगल में कर्व डिवाइड को करके डिवाइड कर मतलब देते हैं पेज पार्ट्स डिवाइड में। करके। बेसिकली आपका जो एम है ना, ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे कि रेक्टेंगल का हम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ट्राइपीजियम, पैरेललोग्राम एंड this circle, ellipse. But if we have a irregular shaped object, how to find the area of this shape that I have drawn on the left hand side? कैसे करेंगे इसका एरिया फाइंड? मैम बॉक्सेस काउंट करके जैसे हम ये बॉक्सेस इस तरीके से, ईच ऑफ सेम लेंथ, और उसको हम, ये मैंने सेम लेंथ के नहीं बन सके मेरे से, ठीक है, और फिर हम बॉक्सेस को काउंट करेंगे, लेकिन मसला आएगा कि इन बॉक्सेस को हम कैसे करें। तो ऑब्वियसली हमें अप्रोक्सीमेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। फिर ये 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 कंप्लीट बॉक्सेस नहीं बन रहे, तो जितने स्मॉल बॉक्सेस होंगे उतना ही हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। जितने स्मॉल में करेंगे तो आपके पास बॉक्सेस होंगे तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो इसी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ही वन स्टेप ये है करने का कि आपके पास कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट हो, यानी कि उसका एक one side is defined by the function y is equal to f of x. One side of this is defined by this curve y is equal to fx, while the other three sides are these straight lines. We can take one as x-axis and these lines as x is equal to a and x is equal to b. Now we are supposed to find the area under this, and we say that we are supposed to find the area under this curve y is equal to f of x from x is equal to a to x is equal to b and x-axis. Okay, so what we do, we draw rectangles in this, under this, in this region, that cover the whole region, and then we calculate the area of each rectangle, sum all the areas, and then we approximate the area of this shape with the sum of the areas of the rectangles. ठीक है, तो हम ये इसमें काम करने जा रहे हैं. Now we can draw rectangles in so many different ways. किस तरीके से, मतलब क्या so many different ways क्यों कहा है मैंने के वे से उसको रेक्टेंगल्स बनाए? रेक्टेंगल्स बनाने के लिए रेक्टेंगल हम ये करेंगे कि हम इसको लेंगे एज अ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और उसको हम डिवाइड करेंगे इनटू, लेट्स से, 4 इक्वल पार्ट्स. फर्स्ट वन को हम x नॉट कहेंगे, इसको x1, ये x3 और ये x4.
ये रेक्टेंगल्स। अब हमें चाहिए ये रेक्टेंगल्स की 4 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है विद ईच ऑफ दिस लेंथ, विद दिस विड्थ, सॉरी ये width। तो हाइट क्या रखे रेक्टेंगल की? हाइट हम इस पॉइंट से, यहाँ से x0 से लेकर x1 तक, we can take any point and we can take, if I am taking this point, then this height, this is my f of x1 star, so this could be my height of the rectangle, this. And if I'm taking this as my height, I'm taking this point, can take any reference point. I can take my left hand point as the height. Now I will calculate the area of each rectangle. Area of a rectangle is equal to length multiplied by its width, that is f of xi multiplied by the width, and then sum of all the areas. And I will approximate the area of this region, that is the definite integral, by this. This is called the Riemann sum. Right. So I have some error. Since it's an approximation, so there exists some error which is given by these values. The area is overdetermined or underdetermined because of these rectangles. So पता चल गया रीमन सम का भी आप लोगों को। रीमन सम में बेसिकली आप सम अप कर रहे हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स को to approximate the area under the curve or to approximate the definite integral. So one way to draw rectangles is to choose the left hand point of the interval. Left hand point से आपने बनाना है ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है। अगर आप ये फर्स्ट ये ले रहे हैं रेक्टेंगल, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, तो इसका जो लेफ्ट एंड पॉइंट है ये हाइट लेते हुए आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की। फॉर द नेक्स्ट इंटरवल you will take x1, f of x1 as the height of the rectangle and draw a rectangle of this height. And for the third rectangle, you will take the left hand point, that is the x2, f of x2 as the height, and you will get this rectangle. And similarly for the fourth one. Okay, ये समझ आ गई है? तो ये आपके पास ये rectangles मैंने वो ड्रॉ की हैं जो कि मैंने लेफ्ट एंड पॉइंट को लेते हुए उनकी हाइट को लेते हुए रेक्टेंगल्स ड्रॉ की हैं। एंड फॉर दिस आई विल गेट दिस फार्मूला, that this is called the left end point approximation. This formula in which I am taking the left end points, values of the function at the left end points, calculate the area to draw the rectangles, and then calculate the area of those rectangles. Then such type of approximation or such type of integration is called left end point approximation. तो इनको हम left hand point approximation कह रहे हैं. This is the formula for left hand approximation. So we are basically approximating the area under the curve f of x, or we are approximating the area, we are approximating the definite integral with this Riemann sum, and this Riemann sum is by using the left end points. So that's why it is called left hand approximation. And similarly, if I take the right end point and take the height of the right end point, this is the right hand, the left hand point. ये ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन है दोनों में, ये गलत है, ये फिगर ठीक नहीं है, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ। लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन नहीं है, राइट हैंड अप्रोक्सीमेशन है। राइट हैंड अप्रोक्सीमेशन से करें तो हमारे पास ये बनती है, ये बनेगी आपके पास फिगर राइट हैंड अप्रोक्सीमेशन से।
ये फिगर बनेगी। और अगर मिड पॉइंट लेके करें, इस इंटरवल से मिड पॉइंट से हाइट लेके रेक्टेंगल्स कैलकुलेट करें, देन यू विल गेट दिस। तो इनमें से सबसे ज्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन कौन सी है? मिड पॉइंट है, लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से एरिया बेसिकली ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द कर्व कैसी है। कुछ सिचुएशन में लेफ्ट हैंड ज्यादा बेहतर देता है, कुछ में राइट हैंड देता है। और मिड पॉइंट आप ये समझ लें कि दोनों की एवरेज वैल्यू ही आ रही है, एवरेज हाइट आ रही है बेसिकली यहाँ से दरमियान की। एवरेज तो नहीं हम कह रहे, एवरेज तो और बनेगी। बेसिकली मिड के ऊपर आप जो वैल्यूज दे रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं मिड पॉइंट। उन पॉइंट्स की तो एवरेज है लेकिन हाइट की एवरेज नहीं है, तो वो इस कर्व के लिए वो बेटर रिजल्ट दे रहा है। सो फॉर द मिड पॉइंट्स वी हैव दिस फॉर्मूला कि मिड पॉइंट के ऊपर आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। ट्रापेजॉइडल रूल भी हम करेंगे लेकिन मेरा ख्याल है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पहले देखें, क्वेश्चन करने के लिए ट्रापेजॉइडल रूल करना जरूरी है जी। क्या होता है ट्रापेजॉइडल रूल? मिड पॉइंट रूल और लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन एंड राइट हैंड अप्रोक्सीमेशन, ये समझ आ गई आप लोगों को? जी ये समझ आ गई या नहीं आई? अभी ये कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। अगर नहीं आई तो बताएं फिर क्या चीज नहीं आई, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ फिर। मैम राइट हैंड पॉइंट। राइट हैंड में ये देख बेटा, ये है राइट हैंड अप्रोक्सीमेशन। ये बेसिकली जो मैंने काम किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि ये यहाँ पे भी राइट हैंड अप्रोक्सीमेशन है मैंने, राइट हैंड अप्रोक्सीमेशन। तो ये अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो जो आपने रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट की है वो राइट एंड पॉइंट को लेके कंस्ट्रक्ट की है। यहाँ पे ये देखिए, ये है मेरे पास रेक्टेंगल की विड्थ। तो अब मुझे इसकी हाइट कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हाइट में इनमें से कौन सा पॉइंट लूं कि जो उसकी हाइट की मैं कंस्ट्रक्ट करूं? तो मैं अगर राइट हैंड पॉइंट लेती हूँ तो मेरे पास जो हाइट आती है वो ये पॉइंट है, इसकी ये लेंथ एफ ऑफ x1। तो इस हाइट की रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की तरीके से नेक्स्ट रेक्टेंगल के लिए ये आपके पास है। तो x2 की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2, उस हाइट की मैंने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की। तरीके से x3 के लिए ये है हाइट, ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसके लिए मैंने ये इस हाइट की रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की। और ये है x4, तो इस हाइट की मैंने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की। ठीक है, यानी मैम स्टार्ट हमेशा लेफ्ट से ही करेंगे। स्टार्ट लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, हम मिड पॉइंट ले सकते हैं, हम इनके दरमियान का x0 ले सकते हैं, x1 ले सकते हैं, इनका मिड पॉइंट ले सकते हैं, इनके दरमियान का कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। इससे आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज आते जाएंगे। लेफ्ट हैंड पॉइंट भी ले सकते हैं, राइट हैंड पॉइंट भी ले सकते हैं, और मिड पॉइंट से भी हाइट कंस्ट्रक्ट करके रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन डिफरेंट चीजें ली हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड मिड पॉइंट। ठीक है जी, यस मैम। किसी और का कोई सवाल? चलिए स्टूडेंट्स, ये फिर आपने इस वीकेंड पे यही देखना है कि हाउ टू डिराइव दीज लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड मिड पॉइंट formulas and compare the three formulas, and we will do the rest in the next lecture. And if you have any confusion, ask me the next class, or you can ask it now। जी किसी का कोई सवाल?